Hello student, I am Monoranjan. Today I will be discuss with you the chapter 7, that is fraction. In this video, we will be learn about the application of fraction by doing some word problem. So let's start all of this. Here on the screen, you look the example 37. What is that? Sarita bought 2 by 5 meter of ribbon and Lalita bought 3 by 4 or 3/4 meter of ribbon. What is the total length of the ribbon they bought? So it is very simple how you do. You will be uh, write the answer here. Answer start. Let's start. So Sarita bought 2/5 meter of ribbon. That means length of a ribbon bought by. Here the spelling mistakes, that is brought हो गया, bought BOUGHT, bought by Sarita is equal to 2 by 5 meter. Okay. Again, Lalita bought 3/4 meter of ribbon. So you should write length of ribbon bought by Lalita is equal to 3 by 4 meter. So the question asks you, this two line is the only information I have extract from your question. The question asks you, what is the total length? What is the total length of the ribbon they bought? There are two portion here. Is one is Sarita and Lalita. Lalita bought this part and Lalita bought this part. So total length of the ribbon will be the sum of these two fractions. So you should write hence total length of the ribbon bought by both is equal to now sum of this 2 by 5 plus 3 by 4. If you sum up this, the unit will be meter. So you may write meter here. So is equal to, if you look both the fraction are unlike. So what should you do? Make it like. Here the denominator is 5 and 4. The LCM of 5 or 4 is 20. So convert each fraction or find the equivalent fraction of each one with the denominator 20. So let's make it 20. 4 into 5 is 20. So you should multiply both 4 in numerator and denominator. Plus 3 into 5 by 4 into 5 meter is equal to 8 by 20 plus 3 5 is 15 by 20 meter. Now I will do other part here. So is equal to, here both are now like fractions. So sum of the numerator by common denominator 8 plus
15 whole divided by 20 meter is equal to 8 plus 15 is your 23. 23 by 20 meter. It is a improper fraction, so make it mixed fraction. 21 jar 20, 23 minus 20 is 3, so it will be 3 whole 20 meter. So it is your final answer. I think it is very simple to do that, because here the question asks you total length. Sarita bought this part and Lalita part this part. So sum of this will be your answer. So let's go to the next. Example 38. A piece of wire 7 by 8 meter long broke into two piece. एक तार था जो वायर था वो broken है, two piece हो गया. Okay, one piece was 3 by 4 meter long. How long? Here it is a rope. Okay, if that rope broke into this part, and if the length of this is from this to this is 7 by 8 meter, total length of the wire. If from this part, if the wire is broken or caught, and the length of one part is 3 by 4, the other, how you determine from this to this? Simply we should subtract from the total length to this part. Total length of the wire is 7 by 8, so you should subtract 3/4 from 7 by 8. So it will be the length of the remaining part. So 7 by 8 minus 3 by 4. It will be your answer. So let's start doing all of this by step by steps. So total length of the wire, total length of the wire is equal to 7 by 8 meter. Okay. Length of one piece. One piece of wire जो कट हुआ था उसका लेंथ क्या था? 3 by 4 meter. 3 by 4 meter. So hence the remaining length of the wire so how long was the other piece? So I'm calculating it. So hence length of the other piece, or hence other piece of wire is equal to, so subtract 7 by 8, it is the total length. You should subtract 3 by 4 from them. So here the unit will be meter is equal to, look at this, here both are unlike fraction. So make it like first, then subtract. Here denominator is 8 and 4. The LCM of 8 and 4 is 8. So here already denominator have 8. So in second fraction, you should convert or find the equivalent fraction of 3 by 4 as denominator 8. So you do that, 7 by 8 minus 3 into 2 by 4 into 2 meter is equal to, now it will be
7 by 8 minus 6 by 8 is equal to, now both the fraction are now like fraction, so difference between the numerator by common denominator, you should write 7 minus 6 by whole divided by 8 meter, and it will be 1 by 8 meter. ओके, सो यहाँ पर एक वायर था जिसका लेंथ था, टोटल लेंथ था क्या, 7 by 8. So from a particular point, let's from this here, we caught them or broke down in that position, and the length from this to this part is only 3/4 था, 3 by 4. So the question asks you find the length from this to this. यहाँ पर question mark था. So how you will determine? Simply we should subtract 3 by 4 from the total part of the wire. So I think you understand better. So then we go to the next number, that is number yes, now I'll take number 5. Already I have I am doing from 1 to 4 7.3, and from number 5 to onwards all are word problem or application based question. So let's start from exercise 7.3. The number 5 is Raj take 2 whole 1 by 2 or 2.5 hours to complete his homework. Sima take 8 by 3 hours to complete her homework. Who takes less time and by how much? The question asks you simply compare these two fraction and determine which one is greater. So we already know that how to determine which fraction is greater. So let's start. Time taken. Time taken by Raj to complete his homework, is equal to 2 whole 1 by 2 hour. Okay. So similarly, time taken by Seema to complete her homework is equal to 8 by 3 hour. यहाँ पर hours लिख लो, hours. It is a improper fraction, so try to make it mix. So we have now I will compare both the fraction, the 2 whole 1 by 2 and 8 whole 8 by 3. So I think I will be convert this mixed fraction into improper. So 2 whole 1 by 2 will be 2 to the 4 by 4 plus 1, 5 by 2 hours. 5 by 2
आवर्स। ओके, सो इसको एज यूजुअल हम रहने देंगे 8/3 आवर्स को। सो नाउ 5/2. Here both the denominator are different, that unlike, so make it like. The LCM of 2 and 3 is 6, so make it 5/2 will be, नहीं थोड़ा हम चेंज कर लेंगे उसको, हम एज यूजुअल रहने देंगे, जो 2 होल 1/3 जो था उसको रहने दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 होल 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 2 is 4 plus 1 by 2 is equal to 5/2. Here denominator is 2, here denominator is 3. So make it like. So you should multiply 3 both in numerator and denominator. So it will be 15 minus 6. Okay. And again you should write 8/3 is equal to, so you should convert 3 denominator, as you should convert 8/3 with the denominator 6. So you should multiply 8 into 2 by 3 into 2 is equal to 16 by 8 to the 16 by 6. The question asks you who take less time. So you should compare 15/6 and 16/6. Which one is greater? So obviously in like fraction, those numerator is greater, that fraction is greater. So 16/6 is greater. So you should write. So 15/6, that means 2 whole 1/2 is less than 16 whole 16/6, that means 8/3. That means 2 whole 1/2 is less than 8/3. So हम लिख सकते हैं hence who take less times. Who take 2 whole 1/2 is the less. So Ras take less time. Ras takes less time to do his homework. So the second part of the question, by how much? By, यहाँ पर हम करेंगे. So what should you do? Simply subtract smaller fraction from greater fraction. 16/6 minus 15/6 is equal to 16 minus 15 whole divided by 6 is equal to 1/6. यहाँ पर लिखेंगे सो रिक्वायर्ड पार्ट बाय हाउ मच लिखा है, यहाँ पर लिख ली हेंस रिक्वायर्ड पार्ट इज इक्वल टू, required part is equal to 1/6. Okay, so Ras take less time by 1, by how much? By 1/6 of his homework. Okay, so it is the number 5. So यहाँ पर हम लिखेंगे hence Ras take less time, hence Ras take less time by 1/6 hour from 1/6 hour. इतना रहने. So we go to the next, that is number 6. Okay. Here a tailor need a 25 volt 3/4 meter of cloth
to stitch 11 shirts for a dance group. He has 21 whole 1/4 meter of cloth. The how much more cloth does he need to complete the work? यहाँ पर टेलर के पास ऑलरेडी सम क्लॉथेस था, बट to stitch the 11 shirt for a group or for dance group, he have required more cloths. So in that case, the question asks you the how much cloth does he need to complete the work. So यहाँ पर इतना requirement है, but इसके पास है इतना 25 होल 3/4 का रिक्वायरमेंट है, बट उसके पास है ओनली 21 होल 1/4 मीटर. सो to complete this assignment, the tailor required more cloth. The question asks you how much more cloth does he need to complete the work. We should subtract required clothes to available clothes. So it will be your answer. So let's start this. LENGTH, length of cloth required, length needed, needed simple लिख लो 25 4 3/4 meter. Now length of cloth is length of cloth is available. Twenty-one 4 1/4 meter. Okay, so hence how much cloth does it need to complete the work? Hence required length of cloth, required length of the cloth need to complete the work is equal to, so required total length needed हमारे 25 whole 3/4 minus 21 whole 1/4. Okay, so to subtract it there are different methods. Now I will be splitting this. 25 plus 3/4 minus 21 minus 1/4. स्प्लिटिंग करने पर ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, प्लस होगा तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -21 minus 1/4. So now 25 minus 24 plus 3/4 minus 1/4. It will be 25 minus 24 is equal to 1 plus 3 minus 1 whole divided by
4, it will be 1 plus 2 by 4. So it is a proper fraction, but is not simplest form. So make it a simple. टू से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा आपका 1/2. So you may write 1 plus 1/2 is equal to 1 whole 1/2 मीटर. इतना क्लॉथ रिक्वायरमेंट होगा, एक्स्ट्रा टेलर को परचेज करना पड़ेगा. ओके, सो और इसको हम और एक तरीके से भी कर सकते हैं. ये दोनों को हम क्या करना पड़ेगा, ये मिक्स से उसको इम्प्रॉपर बना के भी कर सकते हैं. सो हम उसको भी ट्राई करेंगे. सो यहाँ से यहाँ तक हमारा चेंजेस हो जाएगा. सो इसको मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूँ. To take lot of time, enlarge हो गया. Okay, now okay, so let's convert these two fraction into improper. So इसको हम लिख सकते हैं 25 into 4 plus 3 whole divided by 4 minus इसको हम लिख सकते हैं 21 into 4 plus 1 whole divided by 4. Now it will be 24 25 sorry 25 4s are 100 plus 3 103/4 minus 21 into 4s are 84 plus 1 85/4. So now it will be both are like fraction, so differentiate the numerator by common denominator by 4 is equal to 15 plus 3, that means 18/4. So make it simplest फॉर्म में लाएंगे, हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, इसको 2 से शायद कहाँ पर गलतियां हो गया क्या. 25 4s are 100 100 plus 3 103 4 2s are 8 84 plus 1 85/4 13 minus 5 8 18 9 हो गया 2 हो गया. ओके, यहाँ पर गलतियां हो गया है. सो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9/2 is equal to 9 2 4s are 8 8 हो 1/2. यहाँ पर गलतियां डिफरेंट आ रहा है, गलतियां यहाँ पर हो गया है ऑलरेडी. सो यहाँ पर 21 है बट यहाँ पर 24 लिखा गया है.
सो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, सो हम करेक्शन कर लेंगे। सो यहाँ पर थोड़ा देखो, यहाँ पर 21 है, -21 होगा। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 21। सो 25 - 21 विल बी 4 हो जाएगा, क्या 4 हो जाएगा, और सब इक्वल रहेगा 4। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 4 4 1/2, ये अभी आपका 4 हो जाएगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा। इसको हम इरेज करके लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 4 होल 1/2 मीटर। So in both case, you got same answer. Okay. So then we go to the next one, that is the number 7. Okay. Rizwan lives 7 hole 3/4 meter, 7 hole 3/4 kilometer away from his workshop. In the morning, he covered 2 hole 1/2, 2.5 kilometer of his distance on foot and the remaining by the local bus. So how much distance is covered by the, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये है रिजवान का घर, ये है रिजवान का घर, ठीक है, ये यहाँ पर रह रहा है, और उसका जो ऑफिस है यहाँ पर है, उसका जो ऑफिस है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये उसका ऑफिस है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है क्या है, 7 और 3/4 किलोमीटर। जो रिजवान यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, जो मॉर्निंग का जो कवर ऑन फूट में हुआ है, और रिमेनिंग पार्ट दैट मीन्स यहाँ से ऑफिस तक ये लोकल बस सेवा है, बस बस सेवा है। सो आपको पूछ रहा है ये इसका जो लेंथ कितना होगा, सो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, दैट मीन्स लोकल बस से वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो टोटल डिस्टेंस से जो ऑन फुट वाला जो डिस्टेंस है 2.5, उसको सब्ट्रैक्ट करने पर हो जाएगा, ये ही आपका कॉन्सेप्ट। सो क्या करना है, हमको टोटल डिस्टेंस लिखना है उसका, और वो कितना ऑन फुट कवर किया है, और रिमेनिंग को हम सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस। सो हाउ टू प्रेजेंट दैट, थोड़ा टोटल डिस्टेंस, अगर मैं थोड़ा दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, हो गया। सो टोटल डिस्टेंस is equal to 7 हो 3/4 किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू वर्कशॉप। सो नेक्स्ट लाइन होगा क्या, वो ऑन फूड में इतना किलोमीटर कवर किया है डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर बाय
foot is equal to 2 whole 1/2 kilometer. Okay, hence distance covered by was is equal to, यहाँ पर लिखना है बस को हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, सो टोटल डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कवर बाय, सो ये है 7 होल 3/4 -2 होल 1/2, हम 2 वे में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो लुक ऑन द बोर्ड 7 प्लस 3/4 -2, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर स्प्लिटिंग करने पर ये दोनों माइनस हो जाएगा, सो 7 -2 प्लस 3/4 -1/2 इज इक्वल टू 7 -5 होगा आपका, सॉरी 7 - 2 होगा 5 प्लस, देखो यहाँ पर 3/4 है 1/2 है, सो 1/2 को डिनोमिनेटर 4 बनाना है, सो 3/4 एज रहने देंगे, -1 इंटू 2/2 इंटू 2। नाउ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3/4 -2/4 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, डिफरेंस यहाँ पर दोनों के दोनों लाइक हो गया, डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर बाय कॉमन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 3 - 2 होल डिवाइडेड बाय 4, that means it will be 5 plus 1/4 is equal to 5 whole 1/4। ये सॉरी यहाँ पर 2 हो गया, सो हमको उसको 4 बनाना है, 5 whole 1/4 इतना किलोमीटर होगा, यहाँ पर किलोमीटर लिखना जरूरी है क्लास में। सो ये एक मेथड है, और भी एक मेथड है, क्या है, ये दोनों के दोनों मिक्स से हम उसको इम्प्रॉपर बना के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो उसको भी हम ट्राई करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस, मैं थोड़ा उसको छोटा बना लेता हूँ, उसके बाद करूँगा। ओके, सो अभी छोटा हो गया, सो मैं उसको डिवाइड कर लेता हूँ तो पार्ट में, सो हमको यहाँ पर उसको करना है, सो ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था, 7 होल 3/4, सो हम उसको लिख लेना है 7 होल 3/4 -2 होल 1/2 में एक स्टेप ओमिट करता हूँ, 7 उसको इम्प्रॉपर होना है, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31/4 हो जाएगा, -2 होल 1/2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ऑन लाइक है, सो लाइक बनाना है, 2 4 बनाना है, 4 2 का एलसीएम 4 है, सो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, सो 2 को 4 बनाना है, सो 31/4 एज यूजल रहने देंगे, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 2/2 इंटू 2, सो ए हो जाएगा, ए इक्विवेलेंट हो गया उसका 5/2 का, सो 31/4 -10/4। now you will write here both are like fraction, difference between the numerator 31 minus 10 whole divided by 4 is equal to 21/4, so it is a improper fraction, so make it right, 5 4 5 are 20, 21 minus 20 is equal to 1/4। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, 21 से हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जार 20, so ये हो गया 1, so now 5 will be 5 whole number, 1 will be numerator,
and 4 will be denominator, ये होगा। तो मैं ऐसे लिख लिया। सो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। देखो इन बोथ द केसेस द सेम, यू फाइंड सेम आंसर। तो follow which any easy methods, it is depend upon you. So let's go to the next, that is number 8. Jagdeep travel, here another question. Jagdeep travel one whole 3 by 4 kilometer from Karol Bagh to Pusa Road in auto rickshaw. So let's start in, let try to understand by graph, then will we do that. आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। और ये जो प्लेस है, ये जो स्टार्टिंग प्लेस है, ये क्या है? करोल बाग। ओके। सो जो ये एंड पॉइंट है, यहाँ पर क्या है? ये दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ये न्यू दिल्ली, जो दिस पार्ट है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, RS रेलवे स्टेशन है, स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ से यहाँ तक जाने के वक्त, सो यहाँ पर और एक प्लेस है, यहाँ पर और एक प्लेस है, उसका नाम है पूसा रोड, ठीक है। एक जो व्यक्ति है, वो उनका नाम है जगदीप। जगदीप ने यहाँ से यहाँ तक जाना है, करोल बाग से रेलवे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन उसको जाना है। वो क्या किया? सो करोल बाग से यहाँ से यहाँ तक वो क्या किया? ऑटो रिक्शा में किया। ऑटो रिक्शा यहाँ से यहाँ तक कैसे गया? बाय ऑटो, ऑटो रिक्शा में गया। सो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है, करोल बाग रोड टू पूसा, जो है वन होल 3/4 किलोमीटर। दैट मीन्स 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है, 2 किलोमीटर नहीं। बट फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम पूसा रोड टू ऑटो रिक्शा एंड 5 होल 1/2 किलोमीटर पूसा रोड टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ऑन फुट। और यहाँ से जो जगदीप है बाय फुट गया है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, जो पूसा रोड टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहां तक वो कैसे गया? बाय फुट गया। कैसे गया? बाय फुट, बाय पैदल गया। तो डिस्टेंस क्या था? उसका डिस्टेंस था 541/2 किलोमीटर। Okay, you got this. So question asks, what is the total distance covered by Jagdeep? So हमको यहाँ से, that means जो करोल बाग से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस क्या होगा? सो हमको क्या करना पड़ेगा? सो करोल बाग से पुष्पा रोड का डिस्टेंस और पुष्पा रोड टू न्यू दिल्ली का डिस्टेंस सम अप करने पर ये हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑल ऑफ दिस। हो गया, मैं इसको अभी वैनिश कर लूंगा। सो उसके बाद उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट।
डिस्टेंस हम उसको कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जगदीप फ्रॉम करोल बाग टू पूसा रोड, पूसा रोड इज इक्वल टू, वो गया है, वो ऑटो रिक्शा लेकर गया है, उसको छोड़ो, जगदीप ट्रैवल, वो ऑटो रिक्शा लेकर ट्रैवल गया है बाय 103/4 kilometer. So next is, नेक्स्ट लाइन क्या है? सो 5 1/2 kilometer from Pusha Road to New Delhi railway station, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म ऑन फुट, तो यहाँ से यहाँ तक वो अपने पैदल में गया है, तो हम उसको कैसे लेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल, वो जगदीप है, हम उसको छोड़ लेंगे, फ्रॉम लिख लो, बाय जगदीप फ्रॉम पूसा, ए से, पूसा रोड टू न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली कैपिटल होगा रेलवे स्टेशन, वो पैदल गया, इज इक्वल टू 541/2 kilometers. Hence total distance from Karol Bagh to New Delhi railway station, hence hence total distance covered by or traveled by Jagdeep from Karol Bagh to New Delhi railway station. So sum up कर लेना है, is equal to 1/3/4 plus 5/1/2 is equal. सो उसको भी हम दो तरीके से कर लेंगे, मैं उसको इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर बना के कर लूंगा, पर मेरे पास स्पेस नहीं है। सो ये हो जाएगा 1 4 4 प्लस 3 7/4 में एक लाइन ओमिट कर लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 5 2 10 + 1 11/2, 4 2 का जो ये ऑन लाइक हो गया उसको लाइक बनाना है। सो लाइक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 है, सो उसको हम एज यूजुअल रहने देंगे, सो उसको हम बना लेंगे 4, 11 × 2
बाय 2 × 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7/4 प्लस 22/4. Now it will be 7 plus 22 whole divided by 4 is equal to 29/4. Now it is a improper fraction, तो make it proper. 4 7 जा 28. सो डिवाइड करने पर यहाँ पर आ जाएगा 7 होल 1/4 किलोमीटर. ये है आपका टोटल डिस्टेंस फ्रॉम करोल बाग रेलवे स्टेशन, सॉरी क्या है, करोल बाग टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. ओके, सो इसको हम स्प्लिटिंग कर भी कर सकते हैं. सो ट्राई करना, वो होता है या नहीं मुझे बताना क्लास में. सो देन वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज द नंबर 9. Okay, Ranjan used 7 or 1/2 liter of refined oil to fry puris and 6 or 3/4 liter of oil for cooking all other food item. How much oil left after? यहाँ पर क्या है, उसके पास कुछ ऑयल है, इतना ऑयल है, 15 लीटर एक कंटेनर में ऑयल है, यहाँ से यहाँ तक ऑयल 15 लीटर है. उसको लेकर वो क्या किया, जो 7 होल 1/2 लीटर, ये जो लीटर है इसको लेकर पूरी बनाया. दिस वेरी टेस्टी, पूरी बनाया. और जो 6 होल 3/4 लीटर और ले लिया, उसको लेकर वो क्या किया, अदर कुकिंग किया, अदर कुकिंग हो गया. सो वो बोल रहा है तो टोटल कितना हो गया, टोटल तो हो गया, ये दोनों को सम अप करने पर टोटल हो जाएगा, टोटल इतना यूज हो गया, कंज्यूम हो गया. सो रिमेनिंग क्या हुआ, क्या है, क्या रहेगा, रिमेनिंग कुकिंग ऑयल कितना रहेगा. सो यहाँ से 15 लीटर से ये दोनों को मिलाकर सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो उसको हम प्रेजेंट करेंगे अभी. सो रंजन यूज द ऑयल, यूज रिफाइंड ऑयल, क्या लिखेंगे, रिफाइंड ऑयल यूज फॉर refined oil used for puri, used for refined oil used to लिखेंगे, for को used to, for काट लेंगे, refined oil used to, oil used to fry puri, fry puris is equal to 7 whole 1/2 liter. And refined oil used to cooking all other food item, cooking to, used to cooking all other food items is equal to 6 whole 3/4 liter. Okay, so how much oil was left after completing complete cooking if she had a container 15 लीटर. सो उसको भी हम लिख लेंगे. ये है टोटल ऑयल आपका पास अवेलेबल है, टोटल रिफाइंड ऑयल अवेलेबल is equal to 15 liter. Hence, the question asks you how much oil was left. So hence required
amount of oil left, hence रिक्वायर। और हमको दो स्टाइल में कर सकते हैं, पहले मिला लेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। सो हमको थोड़ा उसमें चेंज करेंगे। नाउ total quantity of oil used, total quantities of oil used, डिफाइंड ऑयल कितना यूज्ड हो गया, तो 7 होल 1/2 प्लस 6 होल 3/4। सो उसको हम कैसे करेंगे, तो स्प्लिटिंग करने पर क्या हो जाएगा, 7 + 1/2। आप इसको इम्प्रॉपर बना के भी कर सकते हैं, 6 होल 3/4। सो 7 और 6 को हम क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 + 6 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4। यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, ऑन लाइक है, लाइक बनाएंगे, 2 4 का एलसीएम 4 है, सो 2 है, 2 को 4 बनाना है, तो हम लिखेंगे 13 प्लस 1 × 2/2 × 2 प्लस 3/4, ये 4 है एज यूजल, इसको रहने देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 2/4 प्लस 3/4। नाउ इट विल बी 13 प्लस, ये लाइक है, सो सम ऑफ न्यूमरेटर बाय कॉमन डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा 13 प्लस 5/4। सो ये क्या हो जाएगा आपका 13, जो 5/4 है ये क्या है, इम्प्रॉपर है, सो इम्प्रॉपर को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 13 प्लस 5/4, जो है इसको मिक्स बनाना है, 1 होल 1/4 है, सो उसको भी हम लिख सकते हैं स्प्लिटिंग करके, 4 1 1 + 1/4, सो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 + 1/4 इज इक्वल टू 14 होल 1/4 लीटर यूज्ड ऑयल। ठीक है। सो मेरे पास तो स्पेस नहीं है, तो हम उसको यहाँ पर 14 होल 1/4 को हम मिटा देंगे, मिटा के हम बनाएंगे उसको इम्प्रॉपर, मिक्स है, इम्प्रॉपर बना के भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ये भी सही आएगा, ये सेम 14 और 1/4 लीटर आएगा। सो लेट्स स्टार्ट, मैं उसको मिटा दिया। सो ये क्या हो जाएगा, 7 2 जार 14 + 1, ये हो जाएगा आपका 15/2 प्लस 6 4 जार 24 + 3 27/4। नाउ मेक इट इम्प्रॉपर, 2 है, 2 को 4 बनाना है, 15 × 2/2 × 2 प्लस 27/4 को आज रिजल्ट रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 30/4 प्लस 27/4 इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर, ये लाइक हो गया, सम ऑफ न्यूमरेटर बाय कॉमन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू हो जाएगा 57/4। सो यहाँ पर देखो 57 से हमको 4 डिवाइड करना है, 4 डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 4 1 जार 4, सो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 4 जार 7 16, सो सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा 1। सो नाउ दिस वन विल बी numerator and this quotient will be whole number and this divisor will be denominator. Okay, now you will be write 14 whole 1/4 लीटर इतना कंज्यूम हुआ है और क्वांटिटी यूज्ड हुआ है to fry puris and to other cooking item, but the question asks you find the how much oil was left after completing cooking.
सो हम क्या करेंगे उसको, तो आई थिंक ये आपका हो गया, मैं उसको इरेज कर लूँगा। ओके, देखो ये मेरे पास स्पेस नहीं है, सो मैं इस साइड में भी कर लूँगा, ठीक है। सुनना, हम क्या करेंगे, सो रिमेनिंग hence अमाउंट ऑफ, और क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी लिख रहे हैं तो क्वांटिटी लिखना है, अमाउंट नहीं। यहाँ पर द क्वांटिटीज ऑफ ऑयल लेफ्ट, क्वांटिटीज ऑफ ऑयल लेफ्ट इज इक्वल टू, सो हम क्या, टोटल ऑयल कितना है कंटेनर में, 15 लीटर है। सो यूज कितना हुआ है, यूज हुआ है, सो उसको हम नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, सो ये जो इम्प्रॉपर है इतना लीटर लिखना है। सो 57/4 लीटर। सो इसको देखो, ये 15 का जो न्यूमरेटर है तो 15 है, डिनोमिनेटर 1 है। सो 4 बनाना है, 1 4 का एलसीएम 4 है, सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 into 15 into 4/1 into 4 -57/4। नाउ बोथ आर, सॉरी ये 7 हो गया, 4 होना है, 4। Now both are like, both will be like fraction, it will be present in this side. So आप क्या लिख सकते हैं, 15 4 60, 60/4 -57/4 इज इक्वल टू, ये दोनों के लाइक हो गया, सो डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर बाय कॉमन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3/4। इतना लीटर क्या होगा, रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लीटर इतना होगा। सो चेक कर लेते हैं क्या हम सही किए या नहीं। ये हो गया आपका, ये जो रंजन, रंजन इज, सो वो क्वेश्चन, हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट आफ्टर completing रंजना, सॉरी रंजना कुकिंग इफ शी हैड ए कंटेनर विथ 15 लीटर ऑफ ऑयल। सो हम लिखेंगे क्या, हेंस रंजना यूज्ड, नहीं नहीं नहीं, रंजना यूज नहीं, वो पूरे लेफ्ट, यहाँ पर तो लेफ्ट हो गया ना, लेफ्ट इतना लेफ्ट है। सो हम लिखेंगे हेंस 3/4 लीटर ऑफ ऑयल लेफ्ट, और यहाँ पर होगा इतना सा लिखना है, प्रेजेंट ऐसे करना है। नाउ I will go to the next, that is the number 8. Three friends, Pawan, Sudhir and Diwan rented a house. Diwan occupied one half. Diwan occupied, oh sorry, Diwan occupied one half of the uh, accommodation, and Sudhir occupied 1/3 of the accommodation. The how much accommodation was left for Diwan? वो तीनों एक घर में रहते हैं, ठीक है। सो तीनों के तीनों फ्रेंड तो कुछ, ये है आपका पवन, ये सुधीर, ये दीवान। जो सुधीर ऑक्यूपाई, सॉरी दीवान ऑक्यूपाई, इसका पता नहीं, रेंटेड हाउस दीवान, सॉरी दीवान ऑक्यूपाई, हम, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे, क्वेश्चन में शायद कुछ गलती है, शायद हम टाइप गलत किए हैं। पहले पवन सुधीर, देन है आपका दीवान,
सो पवन ऑक्युपाइड, पहला जो है पवन, नहीं यहाँ पर गलतियां है, दीवान नहीं, ये है पवन। पवन ऑक्युपाइड 1/2 ऑफ द अकोमोडेशन, ये भी है पवन, ठीक है, उसको ठीक कर लेना। पवन ऑक्युपाइड ये 1/4 टोटल, जो इतना स्पेस है 1/2 आधा ले रहा है, जो ऑफ द अकोमोडेशन। एंड सुधीर ऑक्युपाइड 1/3, सुधीर ऑक्युपाइड, ये तो इतना इजी है। तो हम देखो पहले इसको ऐसे बना लेते हैं। देखो ऐसे एक घर है, छोड़ा, हम उसको ऐसे नहीं बनाएंगे। और जो सुधीर है वो ऑक्युपाइड कितना क्या है, 1/3 ऑफ द टोटल रूम हुआ है। सो दीवान कितना ऑक्युपाई करेगा, दीवान कितना, ये क्वेश्चन मार्क है, उसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। लिखेंगे पवन ऑक्युपाइड, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ये सही नहीं लग रहा है, हम ऐसे लिखेंगे कैसे, पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन, पार्ट ऑफ द accommodation occupied by, occupied by Pawan is equal to 1/2, ठीक है। देन नेक्स्ट, और जो सुधीर, कैसे लिखना है, पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन, यहाँ पर अकोमोडेशन डबल एम होना है, सो यहाँ पर डबल एम करना है, अकोमोडेशन occupied by Sudhir is equal to 1/3। जो टोटल अकोमोडेशन है वो क्या है, इन फ्रैक्शन टोटल इज 1, ये तो 1 है ना। सो 1 से इतना हाफ वो ले रहा है, ये 1/3 ले रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये दोनों को मिलाकर उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे क्या, हेंस पार्ट ऑफ द पेड़ में थोड़ा प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन लेफ्ट, लेफ्ट फॉर D1 is equal to टोटल अकोमोडेशन है 1। सो जो पवन है वो कितना ऑक्युपाई किया है, 1/2। जो सुधीर है वो कितना ऑक्युपाई किया है, 1/3। ये दोनों को मिलाकर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सरल कर लेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 -
सो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, ऑन लाइक है, लाइक बना है, 2 3 का एलसीएम 6 है, तो 6 बनाओ डिनोमिनेटर को। सो 1 इंटू 3 बाय 2 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 2 बाय 3 इंटू 2 ना 1 माइनस हो जाएगा 3 बाय 6 प्लस 2 बाय 6 इज इक्वल टू 1 माइनस ये है आपका 3 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 6, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 बाय 6 हियर 1, हियर 1 का न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 1 है, हमको लाइक बनाना है, सो हम 6 बना लेंगे, 1 इंटू 6 बाय 6 कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा उसका वैल्यू, और सिंपल वी शुड राइट नो, उसको हम 6 बाई 6 लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखना है 6 बाई 6, सो 1 जो है वो क्या हो सकता है 6 बाई 6, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो वो उसका वैल्यू 1 है, सो 5 बाय 6। अभी देखो लाइक हो गया, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर 6 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 6, तो इतना पार्ट जो है वो रहेगा दीवान के लिए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 1 बाय 6 हो जाएगा दीवान के लिए। ठीक है, सो आई थिंक देर आर 2 more question left. Do that. If you face any problem, please discuss with me. So यहाँ पर मैं ये जो वीडियो है यहाँ पर एंड करूँगा। आई थिंक it will be helpful for your preparation of your upcoming exam. Thank you so much for watching this video, and bye bye.